Is screen visible? Yes, sir. Okay. So next topic which we are going to discuss is buffer. Why buffer? What is buffer? Okay. So basically, buffer is a reservation of memory. So you want to reserve the memory for storing your application data. That is called buffer. So I always give the example. Okay. Everybody in his or her family, okay, has a water storage. Correct? So means you have in your family, in your home, I mean, storage tank. So why do you store the water? Yes. Why do you store the water? For drinking, food making purpose. Correct. So if you don't store the water, what will happen? If you do not store the water, what will be the problem? There will be no water to drink and use as per needs. Right. So why you need to store the water? Isn't water available 24 hours from the corporation? It's not available, right? Not available. From corporation, water is not available for all the time. Yes. So therefore, you need to store the water. So actually, whenever we talk about storage of water, it is nothing but buffer. Okay. So now suppose particular family has 2000 liter of storage per day. So now once they store the water in the morning, so for whole day, they can use that water for any purpose. Okay. Now maybe at the end of the day, out of 2000 liter water which is stored in the water tank, okay, they might be consuming 1500 liter of water. Correct? Maybe 1000 liter of water. Maybe 1800 liter of water. Maybe complete. Okay. Water. So this is how basically storage of water is very important. Means you have extra storage. That is very important. Because from the corporation, all the time water is not available. We don't say that water is not available in the nature. Water is available in the nature, but from the nature that water has to be brought through the pipeline, big pipeline, small pipeline, tap, and all these things to your home. So it's not possible that to everybody, okay, supply the water from directly dam to 24 hours. Physical solution nahi hai. Because there are so many regions, so many areas where at different time water has to be supplied. Are you getting my point? So therefore continuous water supply is not possible 24 hours. तो इसलिए चाहे आपकी बिल्डिंग हो, चाहे आपका एरिया हो, तो एरिया में बहुत बड़ा वाटर टैंक होता है. करेक्ट? आपण म्हणतो ना गावची पाण्याची टाकी. दैट इज ऑल्सो बफर. गांव के लिए वाटर स्टोर करके रखता है, राइट? दैट इज ऑल्सो बफर. Okay, and also rainy season is not for 24 hours and all the time for all the whole year, right? So this is very important. And consumable water has to be purified. Okay, so many things are involved. So buffer, we are talking about buffer. Buffer means just the storage of data, okay, of your application apart from heap. Apart from heap. तो यूजुअली आप आपके एप्लीकेशन में जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसका एलोकेशन तो हीप में जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम हीप यू मे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर द डेटा. जैसे कि आपका डेटा यानी कि इमेज का डेटा है, वीडियो का डेटा है, ऑडियो का डेटा है, कोई दूसरा टेक्स्ट डेटा हो, दैट इज अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट. सो दैट यू वांट टू स्टोर. ओके, जैसे कि आपने कुछ फाइल रीड किया, उसका डेटा रीड स्टोर करना है. आर गेटिंग माय पॉइंट? वो तो आप सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि सी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में है फाइल में, लेकिन जब प्रोग्राम में डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी से आता है. गेटिंग माय? एक मिनट है, मैं तो ज्वाइन कर रहा है. करेक्ट? तो विदाउट रैम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, your application, your program cannot consume the data.
Okay, and whole data you cannot store in object. Object in which we store object oriented data, which is specific to that object. इसलिए तो object oriented programming है ना. अगर कार है तो कार का data store करेंगे. Are getting mad? Not other than that. So now, how can we get this extra storage using buffer concept? So what is buffer? Buffer is nothing but, okay, used to represent fixed length sequence of bytes. It's a sequence of bytes, 10105. So it is nothing but extra storage. So you can allocate the buffer and in that you can store some data. Okay. So basically in Node.js, there is a built-in module called buffer, B small buffer. And in that, there is a built-in class called B capital buffer. Okay. यानी कि मॉड्यूल का नेम भी बफर है जिसमें ऑल लेटर्स लोअर केस में एंड क्लास का नेम भी बफर है. But very important point. So by default, this model is imported. So you need not require to write import statement. Okay, the way you did for file system model, for other models. Okay, like you can say URL model, HTTP model. इनको आपने import किया था. Require function. तो buffer by default imported. So you don't require to import it. और कोई join कर रहा है? हाँ है. My friends, please join approximately 11:15 a.m. Everybody. Okay. Around 11:15 a.m. 5 minutes आगे पीछे ठीक है till 11:20. So provides buffer provides instances, okay, to store the raw data similar to an array of integers. Okay, and basically it corresponds to the raw memory allocation outside of V8 heap. मैंने वही बोला कि apart from heap memory जो ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन करना है आपके एप्लीकेशन के डेटा को, देन इन दैट केस यू कैन यूज फॉर एग्जांपल स्ट्रीम डेटा जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है. Okay, so that data while working with the file system or streams, it's necessary to handle the octet stream. तो इसलिए बफर लगता है. Okay, यानी कि जो नॉन जावास्क्रिप्ट डेटा है जैसे कि फाइल का डेटा है जो आप पहले मेमोरी में लोड करेंगे. ओके, फिर मेमोरी में लोड होने के बाद आप उसको आपके प्रोग्राम में रीड करेंगे. ओके, अगर राइट भी करना है तो पहले मेमोरी में राइट करना पड़ता है फिर वो फाइल में राइट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा. आर गेटिंग मैन? तो उसके लिए बफर यूज कर सकते हैं. सिमिलरली कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग डेटा. ओके, Node.js is strongly used for OTT platforms. आज जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन Node.js के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए ऐसे एप्लीकेशंस के लिए Node.js यूज होता है. तो OTT प्लेटफॉर्म अगर हम देखते हैं तो स्ट्रीमिंग चलता ही रहता है, कंटिन्यूस स्ट्रीम. कोई चैनल चल रहा है कुछ, करेक्ट? आर गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी OTT चैनल. तो इन दैट केस, ओके, तो बफर कैन बी यूज्ड. ओके, utilize that. So now how to create a buffer programmatically? Actually, previously buffer object was being created using constructor, but now it is recommended don't use constructor and it is also deprecated. So don't worry, there is a static method. Okay, there is a static method in buffer class of which name is alloc. Of which name is what? Alloc. And to that you can pass the size, means buffer size. And optionally you can pass fill and encoding. What do you mean by fill? So once that buffer is created of some size, right? Now you want to initialize that buffer with some value. So that you can mention using second parameter, fill. Okay. Now after that you can mention third parameter, which is character encoding, which is by default UTF-8, Unicode Transmission Format 8. But apart from that you can use ASCII code, base 64. यानी कि जो बफर में डेटा जाएगा अकॉर्डिंग टू विच कोडिंग फॉर्मेट आपको वो स्टोर करना है, राइट? एनकोडिंग डिकोडिंग. So these are three examples. I am allocating the buffer of size 5 only, and the alloc method returns buffer object. Okay, the return type of alloc method is a buffer object. It returns buffer object. So then second example, I am allocating the buffer of size 5 and initializing that all 5 bytes. Okay, तो 5 यानी कि 5 bytes बोलते हैं. तो we are initializing all the 5 bytes by yes, small s. Then in the third example, I am allocating the buffer of 5 bytes, initializing that each and every byte using S and encoding that data using ASCII algorithm.
character encoding algorithm. Okay, if you want to check how much is the size of your buffer, then there is a length member, built-in member length. You can use, okay, to get the size of the buffer. Next, now once the buffer is created, in that how to write the data. So once the buffer is created, whether it is empty buffer or whether you have initialized it, and you want to, after that, you want to write some data into the buffer. So you can call write method. Let's understand prototype of this method. This write method takes total 4 parameters: string, offset, length, and encoding. What is the string? The data which you write to the buffer, that is of string type always. The data which you want to write into the buffer should be always string type. Then offset, okay. So number of bytes to skip before writing to start. Any key consider you have allocated the buffer of size 10. And suppose you want to start writing data from the fifth byte. From what? Fifth byte. Then you can pass second parameter 5. Okay. Number of bytes to skip before writing to start. Default value is 0. यानी कि वो कोई भी skip नहीं करेगा. It will by default start writing from beginning. After that, length. Length means what? How many number of bytes you want to write? यानी कि out of 10 bytes you want to write only 3 bytes of data. That you can specify using third parameter. Maximum number of bytes to be written. By default value is okay length of the buffer. यानी कि पूरा बफर जितना भी आपने क्रिएट किया है वो पूरा राइट करेगा, यानी कि बफर फुल कर देगा. जैसे कि आपका वाटर टैंक है 1000 लीटर का, बराबर है. तो इफ यू से दैट कि हर दिन हम 1000 लीटर पूरा वाटर टैंक भर देते, तो यानी कि वो लेंथ. ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज सिर्फ 500 लीटर ही भरना है, so in that case that you can specify using third variable. Then encoding, while writing data into the buffer, you can encode, okay, using character encoding algorithm that can be UTF-8, ASCII, base64, and so on. By default, वो UTF-8 है. By default, it is what? UTF-8. Are you getting my point? Encoding. Once the write method is called, okay, this write method returns the number of octets or bytes to be written. यानी कि जितने भी बाइट्स का डेटा आपने राइट किया वो रिटर्न वैल्यू होगा. तो मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बाइट का डेटा राइट किया तो 10 रिटर्न होगा. 10 बाइट्स का, सॉरी 8 बाइट्स बोला तो 8 होगा. 5 बाइट्स बोला तो 5. तो रिटर्न वैल्यू मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स यू हैव रिटर्न into the buffer. Okay, and if the data to be written is more than the size of the buffer, यानी कि consider size of the buffer 10 and आपके पास डेटा है 15 कैरेक्टर्स का, then my friends last 5 कैरेक्टर्स का डेटा राइट नहीं हो पाएगा. वेरी सिंपल ना, आपके अगर स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी 1000 लीटर है तो उसमें 1000 लीटर के ऊपर आप पानी भर सकते हैं क्या? नहीं, 1000 लीटर ही भरेगा. वैसे ही तो जितना बफर का साइज है उतना ही डेटा आप फुल कर सकते हैं, उसके आगे वाला डेटा नहीं राइट होगा. यू शुड बी रेडी टू लूज द डेटा. स्किप में वो लॉस्ट हो जाएगा, आप राइट ही नहीं होगा बफर. तो देन टेक केयर ऑफ अलोकेटिंग द बफर साइज सफिशिएंट. ओके, so now suppose you have written a data, how to check whether the data is written into the buffer or not? So for that purpose, you need to read the data. For that purpose, you need to read the data. To read the data, okay, you can use toString method. So toString method is to read the data from the buffer. Okay, so it decodes return string from the buffer. Okay, that is encoded using specified character encoding. So while reading, you can also use encoding algorithm. So see, this is the prototype of toString method, encoding, then start and end. What do by start? Okay, consider you have written 10 bytes of data. And suppose I want to start reading the data from byte number 3. That you can specify using middle parameter, second parameter start. यानी कि मुझे third byte से data read करना है. Correct? Till what you want to read, that you can specify using end, यानी कि last parameter, end index. The index number at which, okay, reading should be ended. The default size buffer यानी कि पूरा end तक वो read करेगा. तभी इसका एग्जांपल हम देखते हैं. तो देखो पहले राइट का ऑपरेशन. So I have allocated the buffer of size 10. Okay, then I want to write data into this buffer. So this alloc method returns buffer object.
you can declare this buffer object, I mean this variable, which is buffer object, using either let, var, or const key. Then in that buffer, I want to write some data. For example, hello. Now, what is this 7? So I want to skip first 7 bytes. I want to skip first 7 bytes. यानी कि मुझे पहले 7 bytes data write ही नहीं करना है. Are you getting my point? 8th byte से write करना है. Then I can specify here sir and start writing the data from 8th byte. यानी कि actually size तो 10 ही है. Correct? और मैं skip कर रहा हूँ 7. तो इसमें से यानी कि बस 3 character ही write होंगे. HEL. If you want to check, you can check using return value of write कितने bytes का data write हुआ. See here like. Correct? Next, another example. If you create a buffer of size 10, you want to skip first 7 bytes and write only 2 bytes of it. Then you can pass third parameter. So here b2 dot write hello 7 comma 2. So here first 7 bytes data skip ho gaya. Getting my point? And then okay, only 2 bytes of data is written. यानी कि ये जो कैरेक्टर है इसमें से सिर्फ एच ई इतना ही राइट होगा एच ई गेटिंग माय पॉइंट तो लेन बाइट्स आर रिटर्न तो बी टू डॉट टू स्ट्रिंग तो हम ये टू स्ट्रिंग मेथड से रीड करके देखें लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा ओह विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट स्टार्टेड स्टार्टेड file open recent this one right नहीं ये नहीं तो गड़बड़ है correct so what we will do in my node app folder we will create a subfolder buffer please create subfolder buffer insert that write data write buffer isolate dot js so now const b यानी कि वेरिएबल बफर ये देखो बफर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है आपको कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं डॉट alloc and I say size 5 so if you want to check what is the size of buffer so you can say console dot log and यहाँ बोलो using backtick size of buffer we are just checking size of buffer dollar okay and we can say b dot length ये देखो आप रन करके देखो ना अभी ये जेएस फाइल है इसको डायरेक्ट आप रन कर सकते हो ये रन बटन पे क्लिक करो ये देखो इधर रन बटन है अगर आपके पास कोड रनर ऑलरेडी है ये रन कर सकते हो देखो साइज ऑफ बफर 5 अदरवाइज आप टर्मिनल ओपन करके क्योंकि इसमें हम कोई सर्वर वगैरह नहीं बना रहे ये जस्ट मॉड्यूल हम सीख रहे वी आर नॉट क्रिएटिंग सर्वर अगर आप सर्वर बनाते हैं तो फिर वो टर्मिनल ओपन करके नोड नहीं तो नोड मॉन यूज करके रन करना पड़ता तो प्लीज चेक साइज ऑफ बफर दिस अभी इस बफर में क्या है डेटा वो हम रीड करेंगे रीडिंग डेटा फ्रॉम बफर तो हियर ऊपर जो हमने लिखा है ओके क्रिएटिंग बफर ऑफ साइज 5 करेक्ट और इधर हम क्या कर रहे हैं चेकिंग साइज ऑफ बफर अभी रीडिंग करना है हम बोलते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू बी डॉट टू स्ट्रिंग ये मेथड कॉल कीजिए then please console dot log data
It can have two string method operation. Correct. Right. String of bytes को convert करना. Correct, correct. It will convert data. तो देखो ये ऐसा कुछ प्रिंट हुआ. Null, 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 null. बराबर है. Online people, what is your experience? क्योंकि ये अभी बफर empty है. बफर empty है. Online people, any response from your side? Hello, sir. Hmm. After size of buffer, it is showing blank space. Yes. It is empty. Right now, we did not write anything into the buffer. बस हमने allocate किया ना buffer. I meant to say you printed in your code, it is showing null, but in my हाँ, code, क्योंकि it मैंने is ये showing. run button के ऊपर click करके किया है. Okay, okay, okay. तो ये आउटपुट विंडो है ना ये देखो ये कौन सा विंडो है ये आउटपुट विंडो है टर्मिनल नहीं है टर्मिनल इधर है Okay. देखो अभी मैं टर्मिनल पे रन करता हूँ cd my node app then cd buffer like this and then I will say node you use node okay right buffer ऐसा दिख रहा होगा ना ये empty Yes, yes. हाँ बिकॉज ये टर्मिनल है और ये आउटपुट विंडो है अगर आप ये डायरेक्ट रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट विंडो में ऐसा दिखा रहा है ये कुछ एनहांसमेंट और ये आपका ओके ये टर्मिनल विंडो जहाँ आपका ये ऐसा दिखा माझ्या केसमध्ये नळ बेसिस नाही इट्स ओके एम्प्टी दिसतंय ना हा एमटी फाइन ठीक है तो ये दिस इज हाउ वी जस्ट क्रिएटेड बफर नाउ व्हाट विल डू अभी इस लाइन को कमेंट करो और इसी लाइन को कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट करो यानी कि बफर और अभी हम आपको यहाँ इनिशियलाइज करके दिखाएंगे कंसिडर मैं यहाँ कुछ भी कैरेक्टर पास कर रहा हूँ जैसे कि मैं एच पास कर रहा हूँ और अभी रन करो नाउ वी आर क्रिएटिंग द बफर ऑफ साइज 5 and we are also initializing each and every byte using this initial character h तो देखो रन करो और आउटपुट विंडो में देखो अभी वो नल 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 में प्रिंट हो रहा है क्या प्रिंट हो रहा है h whether you run it on terminal or whether you run here remaining code is same there is no change in the remaining Yes, same. So this is just initialization. Similarly, third way, you can create a buffer of यानी कि इसी लाइन को कॉपी करो सेकंड लाइन this is creating the buffer of size 5 initializing each byte using h and यहाँ आप encoding पास कर by default वो UTF-8 होता है देखो ये अलग अलग encoding है जैसे कि ASCII base 64 ऐसे encoding दिखा रहा है अलग अलग encoding है ये देखो right the ASCII character encoding
तभी हम रन करते तो ये सेम आउटपुट आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं। ओके रन, हाँ ओके ये रन हो रहा है एच। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ यहाँ बेस 64 और अभी रन कर, यहाँ कुछ मुझे एरर दे रहा है। ओके बेस 64 का प्रॉब्लम, हाँ इनवैलिड, अनेबल टू डिकोड, द आर्गुमेंट वैल्यू इज इनवैलिड, रिसीव्ड एच। तो देखो ये एनकोडिंग का डिफरेंस, यूटीएफ यूसीएस2 भी है। यूसीएस2 क्या होता है, रन करके ये रन हुआ और ये देखो ऐसा कुछ आया, एच नल एच नल एच यानी कि इसको 2 बाइट्स लगते हैं, ऐसा लग रहा है, 2 बोला है ना। तो सी if you really want to know about what done by encoding, we cannot go deep into that topic, so I would request you to google out ये अलग अलग encoding। okay ASCII is not different, सब okay। Node.js चं latest version टाकलं ते auto populate होईल, माझ्या केसमध्ये होत नाही. UTF और अभी ये देखो HHH फाइन। तो ये थर्ड मेथड, प्रॉपर एनकोडिंग, कैरेक्टर एनकोडिंग एल्गोरिथम यू कैन यूज। नाउ अभी राइट करना है हमें बफर, हमारा जो डेमो का नेम है राइट बफर। ओके अगर आप यहाँ हाई बोलते हो एच आई, देखो रन करके देखो तो सी एच आई एच आई एच, तो मैंने वही बोला था आपके बफर का साइज 5 है तो वो फिल करता जा रहा है एच आई एच, लेकिन फिर जो 5th बाइट है उसमें एच जा सकता है, आई नहीं जा सकता क्योंकि 6 चाहिए ना, लाइक दिस। तो टेक केयर ऑफ सच ए। ना अभी इस बफर में हमें डेटा राइट करना है। नाउ राइटिंग डेटा, वंस यू क्रिएट, आपने पहले क्रिएट किया बफर, उसके बाद साइज चेक किया, उसके बाद भी राइट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम। नाउ राइटिंग डेटा टू बफर, तो बी डॉट राइट एंड हियर सपोज you say hello and please run it like say the hello is returned to the buffer, hello is returned to the buffer। correct। if you say bye, देखो रन करके देखो, now buffer size is how much, 5 5 and you are writing only 3 character data, और आपने बफर को इनिशियलाइज भी किया है एच आई ये कैरेक्टर डाल के। तो ये आउटपुट अगर देखेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये ऐसा आ रहा है बाय आई एच, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनिशियलाइज किया था ना ये। तो ये बाय पहले 3 कैरेक्टर्स यानी कि पहले 3 बाइट्स का डेटा राइट हुआ है, उसके बाद ओके आई एच आ रहा। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई इनिशियलाइज करने के बाद क्या डेटा आता है, तो देखो इस लाइन को आप कॉपी कर सकते हो, ऊपर पेस्ट कर सकते हो इधर राइट करने के पहले। ये कॉन्स्ट डेटा है, इसको मैं लेट बोल देता हूँ, लेट, और ये यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ भी हम रीडिंग डेटा फ्रॉम बफर पोस्ट इनिशियलाइजेशन, एंड यहाँ रीडिंग डेटा फ्रॉम बफर पोस्ट राइटिंग, राइटिंग के बाद, पोस्ट यानी कि बाद में, आफ्टर, आफ्टर इनिशियलाइजेशन, आफ्टर राइटिंग, यहाँ मैं आफ्टर लिख देता हूँ पोस्ट। तो अभी आपको देखो रन करो ये
और यू विल गेट आउट। देखो पहले एच आई, उसके बाद हमने बाय को राइट किया तो HIH, ये 3 कैरेक्टर्स रिप्लेस हो गए यूजिंग बाय, यानी कि ओवर राइट हो गए। ओके, और फिर ये IH एज इट, इसे आप वेरीफाई कर सकते डेटा इक्वल टू पी डॉट टू स्ट्रिंग एकदाच करावं लागेल का? हो। हाँ, डेटा इक्वल टू पी डॉट स्ट्रिंग इनिशियलायझेशन एकदाच करावं लागेल. म्हणजे लेट वरती लेट टाकावं लागेल. हा हा, लेट टाकलं, कॉन्स्टंट टाकलं की ते कॉन्स्टंट टाकल्यावर नाही घेणार, तर ते लेट म्हणजे एनी टाइम बदलू शकतो ना आपण. रिप्लेस यू हा. कॅन, लेट म्हणजे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन, हा. इट्स नॉट अ कॉन्स्टंट व्हेरिएबल, इट इज जस्ट अ व्हेरिएबल डिक्लेरेशन, हा. इट्स जस्ट व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. जावास्क्रिप्ट मध्ये आपण लेट किंवा व्हेअर कीवर्ड वापरतो. डिक्लेअर वर्किंग दिस ऑनलाइन पीपल. हाँ, तभी देखो ये जो साइज है इसको हम बोलते हैं 10. ओके, और अभी हम रन करते हैं और यहाँ आउटपुट केयरफुली ऑब्जर्व, देखो ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो ये 10 बाइट्स का बफर है, आपने इनिशियलाइज किया है। ओके, तो 5 बार HI राइट हुआ, और फिर ये फर्स्ट 3 बाइट्स डेटा राइट किया आपने बाय से, और फिर बाकी के बाइट्स एज इट इज लाइक। तभी हम इसके ऊपर राइटिंग करते वक्त, तो मीन्स इट इज राइटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, करेक्ट, राइटिंग फ्रॉम बिगिनिंग. नाउ skipping first, skipping first, consider 5 bytes of data. So now how to do that? ये जो ऊपर b dot write बोला है इसको कमेंट में डालो. Now I will say b dot write, I will say HELLO comma 5. इस purposely मैंने capital में रखा है so that you will not have any confusion. So this is here skipping first 5 bytes of data and then start writing. From 6th byte. करेक्ट, और अभी देखो run करो. देखो फर्स्ट 5 बाइट्स आपने स्किप किए, राइट, और लास्ट 5 बाइट्स राइट हुए. पहले 5 बाइट्स में देखो HI जो इनिशियलाइज किया था वही डेटा. अगर आप यहाँ बोलते हैं स्किपिंग फर्स्ट 7 बाइट्स, यहाँ भी 7, स्किपिंग फर्स्ट 7 बाइट्स ऑफ डेटा, आप तो राइट कर रहे हो HELLO. अभी देखो ये करेक्ट, लाइक चेक HEL, यही राइट हुआ, इतना ही राइट हुआ, HEL.
Okay. So B dot right and ये help. Suppose you want to avoid the confusion, तो एक काम करो, ये जो लाइन है ये आप कमेंट में डालो और सिंपली ये पहला वाला लाइन जिसमें आपने सिर्फ बोला है const b is equal to buffer dot dialog size 10 पास, तो आपको ये क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा. ये देखो HEL इतना ही हो रहा है, राइट. बाकी पूरा बफर एम्प्टी है. मैंने अपने फर्स्ट 7 बाइट स्किप किया और बस इतना ही राइट कर पाया हो क्योंकि साइज 10 है. तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस. आफ्टर दैट कंसीडर, अभी इसी मेथड को कॉपी करते, ये पूरा कमेंट भी कॉपी कर लेते. स्किपिंग फॉर 7 बाइट्स ऑफ डेटा. ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ बट राइटिंग ओनली 2 बाइट्स ऑफ डेटा. तो यहाँ देखो 7,2 7,2 इसको अनकमेंट करो, ये राइट. Now here we are skipping first 7 bytes of data and only writing 2 bytes, means यानी कि HE इतना ही राइट होगा. तो इसमें फर्स्ट 7 बाइट्स एम्प्टी होंगे और लास्ट वाला बाइट भी एम्प्टी होगा उस बफर में. तो रन इट एंड प्लीज चेक. ये देखो HE राइट, ये 8th and 9th बाइट इतना ही राइट हुआ. तो ये फर्स्ट 7 बाइट स्किप हो गए. फिर हमने ये यूज किया कि कितने बाइट्स का डेटा राइट करना है. तो देखो HE. तो वह अभी लास्ट ये सेम हम रिपीट करेंगे, लेकिन आपको एनकोडिंग भी यूज करना है. एनकोडिंग राइट करते हैं तो ये सेम मेथड को कॉपी करो along with encoding. So here in single quote UTF-8 ऐसा बोल सकते हैं. और अभी रन करके देखते हैं. लाइक दिस बेस 64 किया तो क्या होगा. बेस 64 ये भी राइट कर रहे हैं ना. हाँ ये भी हो रहा है. देखो ये FSB ऐसा कुछ आ रहा है. FSB यही अगर आप नोड टर्मिनल पे अगर रन करेंगे ना, नोड टर्मिनल पे कुछ अलग ही मिलेगा. ये देखो बी, आपने क्या राइट किया. ओके HE इतना ही राइट किया ना. ओके बट आपका ये कैरेक्टर इनकोडिंग अलग है. बेस 64. तो आउटपुट देखो कैसा है. हाँ राइट तो 2 ही बाइट्स करेगा बट कैरेक्टर एज पर द कैरेक्टर इनकोडिंग. Various characters. हम्म. ओके बेटर यू कमेंट दिस. इसी को कॉपी करके ASCII इसको भी रन करके देखते हैं. ये भी राइट होगा. देखो ये प्रॉपर हो रहा है. HE ASCII में H है E है ASCII और डिफॉल्ट तो ये है UTF-8. Line mention के लिए तो UTF-8 है. हाँ you are right. It is UTF-8 always.
Correct? Okay, should we proceed? Is everybody doing online? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So now let's read the data in different fashion. Read buffer ऐसा एक डेमो बनाओ. .js. तो यहाँ const p is equal to buffer dot alloc and of size 10. Okay. One more thing which ये शुरू करने के पहले एक चीज आपको और दिखाना था. ये जो write method है, it returns how many bytes of data is returned. तो यहाँ मैं बोलता हूँ let len तो यहाँ console dot log और backtick की यूज करके मैं बोलता हूँ number of bytes return dollar len number of bytes. तो अब आप कितने बाइट्स राइट कर रहे हैं? 2 ही बाइट्स. तो इट विल रिटर्न 2. लाइक दिस. ये देखो ये आउटपुट नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न 2 ओनली HE. और कुछ कौन से बाइट्स राइट हुए वो आउटपुट से पता चलेगा रीड करने के. तो ये भी आप राइट मेथड का जो रिटर्न वैल्यू है उससे चेक कर सकते हो कि आपने कितने बाइट्स का डेटा राइट किया इनटू द बफर. ओके. नाउ लेट्स गो फॉर रीड बफर. तभी ये जो बफर हमने बनाया इसमें राइट करते हैं हम कुछ डेटा. राइट और consider welcome. ओके. ये 7 बाइट्स का डेटा हम राइट कर रहे हैं. तो इसको हम प्रिंट कर दें console.log and we can directly say b.toString like this. अरे जितना भी डेटा है ये देखो वेलकम फर्स्ट 7 बाइट्स का डेटा राइट हुआ था. लास्ट जो 3 बाइट्स है वो फ्री है. वेलकम में 7 कैरेक्टर्स है ना और साइज है 10. तो लास्ट 3 बाइट्स फ्री है. देखो नल नल नल. नाउ ये जो रीड मेथड और जो टू स्ट्रिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका एक फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन रीड लाइक दिस यानी कि यू कैन पास एनकोडिंग स्टार्ट एंड एंड. तो अभी रहने दो ये console.log and b.toString. ये टू स्ट्रिंग मेथड को मुझे कैरेक्टर एनकोडिंग ASCII UTF हायफन 8 येतं का नुसतं UTF 8 येतं? तसं पण येतं. दोन्ही पण दोन्ही इक्वल आहे. दोन्ही सेम आहे. लाइक दिस
ये वेलकम वेलकम। अगेन अभी ये एनकोडिंग भी यूज करेंगे या मैं ऊपर कमेंट लिखता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ कॉमा 3 रीडिंग डेटा फ्रॉम थर्ड बाइट इन बफर फ्रॉम बफर थर्ड बाइट फ्रॉम बफर ऐसा लिख। तो आउटपुट देखो क्या आता है, बताओ तो। रीड करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है? What is the output of this? Only COM is printed out. करेक्ट। ये देखो कम, राइट। तो आपने क्या किया? हाँ, इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0, यानी कि जो W है उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, E का इंडेक्स नंबर 1, L का 2 और C का 3। आपने यहाँ जो आउट कोड है उसमें 3 बोला है ना, फ्रॉम थर्ड बाइट। तो थर्ड बाइट यानी कि इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0। तो वैसे इंडेक्सिंग अगर बिगिंस विद 0 है तो ये जो C है इसका जो इंडेक्स नंबर वो 3 आता है, तो वो वहां से शुरू करेगा एंड टिल द एंड, पूरा टिल द एंड ना, कम नल नल नल, ऐसे भी ये आप रीड। अभी देखो रीडिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 टू मैं बोलता हूँ 6 5 बोलता हूँ 5 फ्रॉम बफर। So here again console.log p.toString। तो यहाँ आपको जो भी कैरेक्टर एनकोडिंग पास करना है, जैसे कि UTF-8, यहाँ मैं बोलता हूँ 3,5 लाइक दिस। तो ये एन इंडेक्स, ये स्टार्ट है। और अभी देखो रन करके क्या आता है आउटपुट? COM आता है कि CO आता है, क्या आता है? CO. CO, करेक्ट। CO. COM नहीं आया ना? नहीं. तो यानी कि ये हमें समझना चाहिए कि अगर C का इंडेक्स नंबर 3 है तो O का 4 है और फिफ्थ तो M का है, यानी कि वो एक्सक्लूड करता है, तो ये एक्सक्लूसिव है। एन इंडेक्स एक्सक्लूसिव, जो एन इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो एक्सक्लूड करके उसके पहले वाला जो होगा वहां तक वो रीड करेगा। और स्टार्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव। ओके। मेन्शनच नाही केलं तर ते टिल द एंड, 0 पासून सुरुवात करून 0 नाही, इनिशियल स्टेज पासून. हा मग ते पहिल्यापासून सगळं सगळं हे काय आपण तसंच स्टेप बाय स्टेप करतो ना. नाही इथं आपण काय पास केलं का ऑफसेट? नाही, सिम्पली वी से बी डॉट, ऑल मेथड्स आर देयर. तुम्हाला सगळे एक्झाम्पल तुमच्याच कोड मध्ये आहेत.
Okay. Should we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So this is all about reading and writing. अभी हम आगे देखते हैं. From method. So you can also create a buffer by using array, using the from method, which is a static method of buffer class. But to this array, you need to pass number array only. बाकी का array यानी कि string array वगैरह allowed नहीं होगा. But only number array. So see the example buffer dot from, and to that from method we are directly passing array, which contains 10, 20, 30. And as here the buffer is created using array, we can iterate over buffer using for loop. So any for loop you can use. So here जो example में है वो for of loop है. So const ELE of B. So where ELE represents each and every element of the array 10, 20, 30 and so on. Okay. So ये from buffer ऐसा sorry not file, not folder, file from underscore buffer dot js. Please create new, and then we'll say const b is equal to buffer class dot from this method. And to this method you pass 10, 20, 30. You can pass randomly. देखते हैं ये क्या होता है, like this. And then अभी हम size of buffer check करते. console.log backtick use करो, size, buffer size. Dollar, then v dot length, ये built-in member use करो. And अभी iterating using for of loop. So for let ELE of B. Okay. और अगर ये for of loop में single statement है तो need to write curly brace, opening closing curly, और ELE को print. अभी हम इसको रन करके देखते हैं. देखो साइज बफर साइज 5 है, यानी कि बफर का जो साइज है वो 5 है. Okay. Yes. Suppose I Yes, sir. put rather than number, I put here some characters. Character लेता है क्या हम देखते हैं. So we are trying to create a buffer by calling from method using array of string or array of character. जावास्क्रिप्ट में डबल कोड यूज करना है तो सिंगल कोड, वो स्ट्रिंग ही रहता है. ओके. तो चेक करते हैं. तो देखो नहीं हुआ, ये 000 है, वैल्यू नहीं आया ना. ओके. तो यू डोंट गेट एनी एरर. साइज तो 3 है लेकिन प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं हुआ है बॉक्स. टेक केयर ऑफ दिस. और ये वैल्यूज बराबर आते हैं लाइक दिस.
ठीक है। Next, you can also convert the data of the buffer into JSON format. The way there is a two-string method, there is also two JSON method. It returns a JSON representation of buffer. यानी कि JSON object return होता है. So, suppose I am creating the buffer of size 20, in that I am putting the value Switzerland as an example, and I want to convert this into the buffer. So b.toJSON. So it returns JSON object. तो entire JSON object I can print like this. और ये जो JSON object return होता है उसमें एक built-in property होता है data that will exactly represent Switzerland. ये जो characters आपने write किए buffer में. तो to JSON यानी कि JSON underscore buffer dot JS. So let's create const b equal to buffer dot allocs size 20. And then here we want to say b dot write. Okay, in single quote or double quote Switzerland. Like this. After that, const JSON object. ये JSON object return होगा. And we'll say b dot to JSON. Call this method. And then ये पूरा object आप print कर सकते हैं. JSON को भी. So here, reading buffer data in JSON format using this to JSON method. And अभी run कर ये देखो ऐसा प्रिंट हुआ. ये पूरा बफर ऑब्जेक्ट सॉरी JSON ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है. इसमें दो प्रॉपर्टी होते हैं. एक टाइप प्रॉपर्टी. तो टाइप यानी कि जो डेटा है वो कौन से टाइप का है. इट इज अ बफर. अरे डेटा एक प्रॉपर्टी और उसमें देखो ये अरे होगा. तो एक्चुअली ये जो है ये यूनिकोड से. ओके 83 इज यूनिकोड ऑफ S 119 इज यूनिकोड ऑफ जो भी S के बाद यानी कि आई थिंक W 105I जो स्विट्जरलैंड का जो स्पेलिंग है. तो हर एक कैरेक्टर का और बाकी के जो बाइट्स है वो एम्प्टी है बिकॉज योर बफर इज ऑफ साइज 20. एंड इफ यू चेक दिस स्विट्जरलैंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 बाइट्स राइट हुए. 9 बाइट्स एम्प्टी है जो आपको आउटपुट से पता चलेगा. ओके ये देखो 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9 और ये आपके स्विट्जरलैंड. ASCII व्हॅल्यू नाही युनिकोड व्हॅल्यू. ASCII म्हणू शकता बट ये यूनिकोड यूज करता है तो यूनिकोड बोले. तो यूनिकोड में भी जो इंग्लिश कैरेक्टर्स जो है फर्स्ट 255 कैरेक्टर उनके कोड और ये कोड सेम है. हाँ मग नंतर तुमचे युनिकोड मध्ये अदर ह्युमन लँग्वेजेसचे पण कॅरेक्टर जसं आपलं मराठी देवनागरी लिपी जी आहे त्याच्या प्रत्येक कॅरेक्टरला त्यांनी कोड दिलाय. आपण जे मराठी बोलतोय सगळ्याच ह्युमन लँग्वेजेस चायनीज जापनीज जर्मन फ्रांस फ्रेंच जो भी है. हाँ इटालियन ओके कोरियन मलेशियन ओके थाईलैंड जितने भी ह्यूमन लैंग्वेज हर एक के लिए कैरेक्टर कोड दिया है उन्होंने यूनिकोड. तो दिस इज यूजिंग जेसन मेथड. हाँ इसमें
आपको अगर सिर्फ डेटा पार्ट देखना है, जस्ट फेचिंग डेटा पार्ट, डेटा प्रॉपर्टी, फेचिंग वैल्यू ऑफ डेटा प्रॉपर्टी ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। इसमें देखो console.log and we'll say JSON object.data. That's it. और ये देखो इतना, ये जो क्लास वाला है अरे प्रिंट हुआ। Actually, दोन्हीचं हे सेमच राहिलं ना, जेसॉन आणि जेसॉन डॉट मेटा. नाही ना, वेगळं आहे बघा ना, जेसन ऑब्जेक्ट मध्ये पूर्ण ऑब्जेक्ट प्रिंट होते, जेसन ओबीजे डॉट डेटा मध्ये त्याचा डेटा पार्ट प्रिंट होते. फक्त त्याचा डेटा दोन प्रॉपर्टी ना. टाइप एक आहे. हा करेक्ट. टाइपची व्हॅल्यू काय आहे? टाइप बफर आहे. बफर आहे आणि डेटा जे आहे ते आपण प्रिंट करतो. तुम्ही टाइप पण प्रिंट करू शकता. हा, जेसॉन डॉट टाइप म्हणलं तर बफर प्रिंट ते जे त्यांनी काय दिलेलं आहे. अच्छा. So this is how using JSON to JSON method. Next is concat method. Concat method is used to concatenate one buffer to another buffer, and the resultant buffer will be the combination of this both the buffers which are to be concatenated. Not necessarily both the buffer, all the buffers which are concatenating. So there is no limit how many buffers you can concatenate to each other. Means joining one buffer to another buffer using concat method. So here first parameter list, which is nothing but the array of buffer objects to be concatenated. Okay. And last parameter is total length. So total length of resultant buffer will be usually, okay, the length of the first buffer, then second buffer, then third buffer. यानी कि जितने बफर आप concat कर रहे हैं उनका जो भी लेंथ है जिसका सम आएगा वो टोटल लेंथ होगा आइडियली. बट यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई टोटल लेंथ कि आपको टोटल लेंथ ओके कुछ अलग ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज फर्स्ट बफर में 10 कैरेक्टर से सेकंड बफर में 5 है, तो रिजल्टेंट बफर तो 15 होगा लेंथ, लेकिन आप 13 भी बोल सकते हैं. Are getting one? That you can specify using total third parameter. If not given, then total length is calculated automatically by adding the length of buffer object in the list. So यहाँ देखो, so we are creating buffer of size 5 and I am filling that buffer initially. There is also one more method fill, okay, which is same like initializing buffer. हाँ, chase. After that I am creating another buffer having size 6 और उसमें मैंने बोला है master. So now I want to concatenate this both the letters. So buffer.concat, concat is a static method of buffer, and to this concat method we pass array, this list of buffer objects, b1 b2 in square bracket, and resultant buffer हम read कर. रिझल्टंट की व्हॅल्यू 5 आहे. Total होगा ना. त्याचा अलोकेशन 5च केलं. Resultant buffer नाहीच ना, त्याचं कुठे allocation केलं? बघा ना, resultant buffer b3 आहे. अच्छा, त्याला अलोकेट केलं नाही तर तो एन नंबर n number नाही, त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं होईल? b1 plus b2. हाँ, it's not n number. It's not also b1, it's not b2. b1 plus b2 का जितना भी लेंथ होगा वो होगा रिजल्टेंट बफर का साइज. हाँ, if you don't give the size will be auto calculated based on the addition of length of buffers in the concat. तो concated demo, concat buffer ऐसा लिखो. .js. So let's say const b1 is equal to buffer.alloc. Here I say size 5 and b1 dot fill. ये भी एक मेथड है, fill मेथड. और मैं यहाँ सिंगल कोट ना तो डबल कोट chase. करेक्ट. तो फिर हम इसका पहले लेंथ चेक कर लेते हैं. console.log. वैसे तो दिख रहा है size of buffer b1 dollar b1 dot length like
Okay. Yes. Yes. ठीक है. After that, const b2 is equal to buffer dot alloc 6. Then we will say b2 dot write master. Now let's concatenate buffers. Const ये b2 का भी हम लेन चेक करते हैं. इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा. साइज ऑफ बफर b2 एंड b2 डॉट लेंथ ऐसा लिखो. हाँ, अभी हम const b3 is equal to buffer dot concat. ये मेथड देखो. तो हम यहाँ लिस्ट पास करेंगे b1 b2. देन हम इसको रीड करते हैं console dot log, obviously using toString method. And size, copy this, size of resultant buffer b3. And please say here b3 dot length. b1, b2, b3. कॉन्टेंट स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये द्यावं लागतं. It's a list, ना? List है, list. लिस्ट Square bracket नहीं, concat से तर round bracket आहेच ना already. त्याच्यात अरे पास केला. Working? म्हणजे राईट करायचं. रीड करतोय ना. हा रीड फ्रॉम बफर अँड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन. अरे yes. Working this online people? Yes. ये देखो size of resultant buffer b3 is 11. तो 5 plus 6 11 और एक chase master. इसमें flexibility देखो. तो consider कि ये लाइन आप जो concat लाइन है इसको कॉपी करो, उसके नीचे पेस्ट करो, इसको कमेंट में डाल दो. एंड सपोज मैं यहाँ बोलता हूँ 9. ओके, यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, concatenate buffers with total length as 9 bytes. तो अभी आउटपुट देखो क्या आता है.
वरचं ट्रिम करू शकतो. तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है? मास्क. Hello मास्क. आणि जर रेंज जास्त ठेवली 15 ठेवली तर वरचा तो एम्प्टी तो एम्प्टी राइट. देखो चेस मास्क ऐसा है ना कुछ. ओके, तो ये 9 साइज ऑफ रिजल्टेंट रिपोर्ट. ER नहीं आया ना, मास्टर ER तो स्किप हो. तो जितना यानी कि आपने लेंथ बोला है उतना ही रिजल्टेंट बफर उतने ही साइज का बनेगा. Next, compare method. Compare method you can use to compare the content of two buffers. Okay, to call compare. This is not a static method. You need to call compare method using one buffer object, and second buffer object you need to pass as a parameter. The buffer object using which you call compare method is called source buffer, of which content you want to compare with the buffer which you pass parameter, that is called target buffer. The parameter buffer is called target buffer, and this compare method returns one number which indicates, I mean it returns the result of number type which indicates, okay, which buffer comes first, okay, which buffer comes second. जो कंपेयर कर रहे हैं दोनों बफर में, यानी कि कंपैरिजन डिफरेंस वो रिटर्न करता है. ओके, इन टर्म्स ऑफ आइदर 0 if both source buffer and target buffer are exactly same, यानी कि contents are exactly same. It returns positive integer if the target buffer, okay, should come before the source buffer when sorted. And it returns -1 if the target buffer, okay, should come after the source buffer when sorted. यानी कि सब sorting order में content of target buffer अगर lesser smaller than the content of source buffer है तो positive return होगा. Correct? And अगर source buffer के content, are getting my point? Source buffer के content smaller than target buffer के content तो -1 return होगा. Are getting my point? ओके, यानी कि जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है तो यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. तो हियर वी आर गेटिंग बफर ऑफ साइज 4 हैविंग प्ले, p कैपिटल प्ले, एंड बफर ऑफ साइज अगेन 4 विद p स्मॉल प्ले. तो इसमें स्पेलिंग इज राइट बट ओनली एक अपर केस में एक लोअर केस में वो भी एक ही कैरेक्टर. तो नाउ हियर इफ यू से b1 डॉट कंपेयर b2, if the content of B1 are larger than content of B2, ये positive return करेगा. And if it is smaller than B2, B1 content of B1, if they are smaller than B2, then negative return होगा. And if the contents are exactly same, then result will be 0. यानी कि they are same. तो compare buffer ऐसा हम डेमो बनाते हैं. Compare underscore buffer dot js. तो const b1 is equal to b capital buffer dot alloc. और यहाँ मैं size 4 बोलता हूँ and in double quote p capital play. Then again const b2 equal to b capital buffer dot alloc. Again 4 p small. Like
Now comparing buffer, both. Then we'll say const compare result ऐसा लिखते हैं. v1 dot compare v2. console.log backtick use करो compare result like this. -1. What is output? -1. यानी कि जो सोर्स बफर है इसके कंटेंट अगर सॉर्ट करते तो स्मॉलर देन जो टारगेट बफर है उसके कंटेंट मींस पी कैपिटल प्ले इज स्मॉलर देन पी स्मॉल प्ले. ऑब्वियसली जो यूनिकोड होता है कैपिटल पी का इट कम्स बिफोर द लोअर केस. यानी कि अगर आप आस्की कोड की भी बात करें तो जो अपर केस लेटर है उनका आस्की कोड एज कंपेयर टू द आस्की कोड ऑफ लोअर केस लेटर ओके स्मॉलर होता है. तो इसलिए -1 रिटर्न है. वही अगर आप यहाँ p छोटा करो दोनों केस में और रन करो दोनों में देखो एग्जैक्टली सेम कंटेंट इट शुड रिटर्न 0. यस इट शुड रिटर्न 0. यस ये देखो कंपेयर रिजल्ट इज 0. Okay, and if I say p capital in buffer b2 it should return positive integer. Yeah, compare result plus.
Okay. Let's go further. Copy method. Copy method is used to copy the content of one buffer into another buffer. Okay. So here again, this method is not static. We need to call this buffer using buffer object. So the buffer object using which you call this method is called source buffer, of which content you want to copy into the buffer which you pass as a parameter. The parameter buffer is called target buffer. Plus you can specify, okay, second parameter which is target buffer star. What do I mean by that? So it is an offset in target buffer, okay, from which to begin writing. यानी कि target buffer में जब आप copy करना शुरू करेंगे, यानी कि write करना शुरू करेंगे, तो कहाँ से, कौन से byte से शुरू करना है? Okay. So not necessarily from the beginning. By default, it will start from beginning. By default was 0, meaning it will start, okay, writing into the target buffer from the beginning. But you can customize that by specifying this target buffer start. Then source buffer start. What do you mean that? So any के जो source buffer से आप bytes copy कर रहे, or you don't want to copy from the beginning. You may want to copy from in between. So that in between start index you can specify using the third parameter. Source buffer start. Offset in source buffer from which to begin copying. And again source buffer end. And from the source buffer you don't want to copy till the end all the buffers. You may want to copy till some, okay, particular index number in that source buffer. So then in that case you can mention that. So offset in source buffer at which to stop copying. So for example, see here, I have a buffer, okay, of size 11, and I have initialized that buffer using this intelligent. Okay, now this is empty buffer which I am creating, okay, which is buffer B2, and I want to copy the content of B1 to B2, to B1 dot copy B2. That's it. And if you read the data from B2, initially it was empty. Now you will get this intelligent. So copy buffer, copy underscore buffer dot js. So const B1 equal to B capital buffer dot alloc. I say size 11, and here I will say intelligent. Like. Then let's create another empty buffer. Okay. Buffer dot allow size 11. Okay. So now let's copy. Copying content of B1 to B2. So you just say B1 dot copy B2. And now reading B2 buffer. Console dot log. Say B2 dot to string. Run this.
करेक्ट? इंटेलिजेंट. नाउ सपोज ये कॉपी करते वक्त लेट्स कमेंट दिस. आई से v1, इस लाइन को कॉपी करो, v1 डॉट कॉपी p2, and here I pass second parameter. Suppose I pass 3. What is the meaning of this? 3 characters. No. ये जो सेकंड पैरामीटर यानी कि टारगेट बफर स्टार्ट, यानी कि टारगेट बफर में कहां से स्टार्ट करना है राइटिंग, वो है. ऑफसेट इन ओके p2 बफर फ्रॉम विच स्टार्ट राइटिंग. देखो अभी ये देखो, ये नल 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 पहले 3 छोड़ दिए ना उसी. इट इज एज गुड एज स्किपिंग दोज नंबर ऑफ बाइट्स, राइट? इंटेलिजेंट as good as skipping number of bytes, skipping 3 bytes, first 3 bytes in target buffer which is p2. तो ये मीनिंग है इसका. ये एमपीस बनाना पाहिजे. काय? पहिले हा, कारण तुम्ही ते स्किप केले ना. हां. किंवा त्याला आपण इनिशियली एक व्हॅल्यू देऊन ठेवायची, म्हणजे ते इनिशियलाइज झाली राहील, नंतर मग पुढचे ते ओव्हरराईड होतील. हाँ, you can also do that. Correct. Now, after that, suppose अभी इसको भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ. अभी इसी को कॉपी करो. Now here, suppose I say 5. What is the meaning of this? यानी कि ये तो होगा ही skipping first 3 bytes in buffer p2. Okay. And start copying from 5th byte from source buffer v1. ये इसका मीनिंग. अभी नीचे हमने ऑलरेडी रीडिंग तो किया ही है, यानी कि सोर्स बफर से आपको कहां से कॉपी करना शुरू करना है, फ्रॉम विच पोजीशन यू वांट टू स्टार्ट कॉपिंग. ये आउटपुट देखो, ये LIGENT. बराबर, ये तो B2 बफर है, लेकिन जो सोर्स बफर है उसमें इंटेलिजेंट है ना. तो अगर आप यहाँ देखो तो ये छोड़ दिया 0 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ से कॉपी करना शुरू किया, LIGENT, इतना कॉपी किया उसने. फ्रॉम इंडेक्स नंबर ओके 6 ना. हाँ करेक्ट, इंडेक्स नंबर 5 नॉट 6. तो 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर 5. करेक्ट. आफ्टर दैट लास्ट पार्ट. अभी आपको ये दोनों भी पिक्चर चाहिए, इसको मैं ये करता हूँ. हियर आई से 2 की जगह मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ 3 बोल. Start copying from 5th byte from source buffer from 5th byte till okay. ये एक्चुअली गलत है. 8th byte till 8th byte.
लोअर नहीं ले सकते, तभी हम इसको रन करते और ये देखो इतना ही आया LI। तो इसके आगे वाला इंडेक्स देना पड़ेगा 57, तो एक्सक्लूसिव है। Done, my friends? Understand? Yes, sir. So we will stop. Continue to the remaining part.